Hello viewers, today's topic is G20 and India presidency. We know last 1 month there is a lot of headlines about the G20, why this is important, what is the India's positions in the upcoming, or we can say that the 2023. So let's discuss what is the G20, what is the relevance in international relations or world politics today, why it is so popular or so significant today in the world economy, world politics, world society. We know that India is going to already taken presidency for the 1 years G20 under the Troika. The last summit of G20 was in Bali. Right now, in the next year, it will be going to be in India. So let's discuss what is the G20, what is the relevance, why it is important in international relations, international politics in the world order. We know in the last 1 and 2 years, a lot of changes in the world politics. If you look at this picture, so India is going to welcome these programs. It is one of the largest event, the group of 20's largest economy of the world. So India's symbols, emblems, it is about the G20, which represents Vasudev Kutumbakam. If you look at this picture, it's clearly so that whatever the symbolizations, India's one earth, one family, one future, it is the objective of G20 that the event going to organized by India in this year. So it is the great opportunity for the India. Recently, our foreign ministers has given lot of remark about why G20 is important for the largest democracy of the world, that is known as India. So we can say this is the group of 20 largest economy of the world. We can say the group of 20 is the premier forum for international economic cooperations. It played a very important role in shaping and strengthening global architecture and governance on the all major international economic issues, including climate change, global common goods. India holds the presidency of the G20 from already taken the December 1 to 30th December 2023. So these are the flags of G20 nations of the world community. They are the largest economic integrations grouping of in international relations. So if we look at the status of G20, almost all major countries, all major economies, including industrial economies, largest industrial economies, are the part of the G20. It was started in 1999, the group of the industrial countries today, but it extended to across the globe. So we can say G20 is a leading forum of world major economic that seeks to develop global policies to address today's most pressing challenges in the world society. In the last 2-3 years, we know the world is suffering from the pandemics. It is the one unique kind in this century, that is the corona pandemic. The health pandemic is there. Then recently, in the last year, it was the started of Russian-Ukrainian war. So there is a lot of geopolitical rift and shift, economic recessions. Many more things was there. They have to address by the major countries, major economies. That is the also it is the duty of G20 country. If you look at the historical facts, the G20s, we say the G7 finance ministers and central bank governors, at the time of beginning, they started for the discussions, representations addressing the world financial challenges. If we look at the status conditions, share of G20 in the world economy,
90% of the global GDP, 80% of global trade, and two-thirds of the global populations. This is the total structures design of G20 today in the era of 21st century, where all are ready to address major economic and common global challenges in the era of globalizations. We know in this era of globalizations, all countries trying to resolve the major challenges, major issues, that is the common issues of the world society or world politics or international relations. So it is the privilege for India is going to become presidency, going to grand welcome of all most of the leaders, G20 leaders in next September here. It is the 1 year programs, it already started in India. Lot of events, conference, groups, ministers, many things is there about G20. But end of the programs, India is going to welcome the leaders of G20 here in this year. So this is the emblem or symbol, we can say, Vasudhaiva Kutumbakam. Whatever the objectives India already promoted for the world society, it is the Vasudhaiva Kutumbakam. We consider our Vedas, our Hindu epics, integrated world, integrated society, integrated planet. There is no disintegrations. That's why we promote the one earth, one family, one future. That is the Vasudhaiva Kutumbakam. India is going to lead through these promotions. We can say G20 comprises almost all advanced and industrial economies of the world economic society. Most of the, we can say the Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Korea, Republic of Korea means the South Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdoms, United States, along with European Unions. G20 members currently account of world GDP, around 80%, 75% of trade, 60% of global populations. G20 was founded in 1999. If you go through the history, what are the basic objective of this G20 was earlier for the financial minister and central bank governors to discuss global economic and financial issues. But today it is upgraded level of heads of the state and government. It is the premium forum for international economic cooperations in the era of globalizations. Since 2011, G20 Summit is held annually under the leadership of rotating presidency. It is now turn of the India going to welcome, going to organize this G20 celebrations. If you look at theoretical perspectives, the idea behind the G20, why it is the important today, what is the relevance, significance, how to resolve the global common challenges through the G20. We know it is a diverse group, stakeholders. They come together to make globalization's work better for all. G20 designated as the premier forum for international economic cooperations, address the challenges, agenda for cooperations, trade, integrations, many more things is there in the box of Pandora box of G20. G20 formulated for a strong, sustainable and balanced growth, strengthen the international financial regulatory system in the world economy today. If you go through the how G20 works there, G20 presidency, there is the groups of the three countries at a time, the past, present and the future. Suppose that India today
is the 2023. Earlier it was the Indonesia, Troika. This is called the Troika. The next one is the 24 is the Brazil's. So it is the group of the three countries who decided how to consult, organize this event to the different platforms, different forums with a group of leaders, foreign ministers, delegations, invited countries. Many more forum is there, even then youth also participated, civil societies. So this troika, it was the Indonesia, India and the Brazils. Indonesia already happened in 2022 in November. Right now it is the part of India going to organize this event. Then next will be the 24 in the Brazils. So it is the rotating idea there, G20 presidency. G20 presidency steers G20 agenda for 1 year and hosts the summit. G20 consists two parallel tracks. One is the financial tracks and second is the Sherpa tracks. Recently, we know the former Niti Ayog Vice Chairman Amitabh Kant is the G20 Sherpa for the India. Financial Minister, Central Bank Governors leading the financial track, while the Sherpa lead the Sherpa track after the financial track. So G20 from the Sherpa side, coordinated by the Sherpas of the member countries, who are personally messages of the leaders, finance track led by the finance minister, central government governors of the member countries. Within the two tracks, they are the thematically oriented working groups in the which the representatives from the relevant ministries, members as well as guest countries, various international organizations participate in this G20 summit. So India welcome all G20 participants in this year. This program already started. The financial track is mainly led by the Ministry of Finance. Working groups meet regularly throughout the term of each presidency. Sherpas negotiations courses of a year discussing agenda items for the summit and coordinating the substantive work of the G20 for the 1 year. So these are the two separate tracks, one the financial, one the Sherpa tracks, how to coordinate, how to make the event successful for the presidency country. So India is responsible for all going events for this year. In addition, we can say engagement groups which brings together civil societies, parliamentarians, think tanks, women, youth, labor, businessmen and researchers of the G20 countries for the discussions. We know G20 have no permanent secretariat like the other grouping in those SCO, Shanghai Cooperations, BRICS, and many more things is there. The presidency is supported by the Troika, previous, current, and incoming presidency. So that's why Indonesia, India, and Brazil, it is the Troika, the past, that is the previous, present, and the incoming presidency. So it is the India's turn up right now. So during India's presidency, Troika will comprises Indonesia, India, and Brazil. If you look at G20's Indonesia, what was the agenda, how it was the relevance today, what was the discussions, what was the common discussions, common declarations, that is the Bali declarations in 2022 in November at Bali. This was the emblem, this was the previous presidency, that is the Indonesian presidency projected. It's defined a lot of things for the world society. It was the 50th G20 summit in earlier Saudi Riyadh, November 2020. That was the decided the troika for the Indonesia, India, and Brazil. The handover of the presidency from the Italy to Indonesia took place on the October 31st, 2021 in Rome, Italy.
If you look at G20 Bali leaders' declarations on 15 to 16 November, where our Prime Ministers, Foreign Minister also attended, in the Bali declarations, it was the very unique, unprecedented declarations due to the new shifting in the world order, in the world politics, international relations, especially the beginning of 2022 or post pandemic. At the time of unparalleled multidimensional crisis, we have experienced the devastation brought by the COVID 19 pandemic and other challenges, including climate change, caused the economic downturn, increased poverty, slowed down global recovery, and hindered achievement of sustainable development goals. These were the premiers, or we can say the final outcomes of the Bali declarations. There is some others agenda was included. The critical comments by the leaders of the G20 about the Russian Ukrainians military conflict that was expressed in the leaders' declarations dominated by the summit taking place at the time of geopolitical tension, economic slowdown, and rising food and energy prices across the world. That's why Russian President Vladimir Putin skipped that Indonesian summit due to the domestic regions. Many more things is there. If we look at India's presidency in 2023, why this is important today? What was the objective? What is the objectives? What will India will gains in the global platforms, global forum of these economic integrations, the group of economies, advanced economy or major economy of the world society, world politics, world political system, economic systems. So it is a very crucial time for India to show its strength right now, what India work for, what India stands for, what India democracy stands for. It is the message for the world society. That's why Vasudhaiva Kutumbakam become the our promotional words for the world society. India's presidency G20 campaign at the critical time, the both India and the G20 countries. We know due to the last 1 year from the coincide the 75th year of India independence. It is also Indian government of India is celebrating Amrit Kal, Amrit Mahotsav through different institutions, different forums, different programs right now. It is the 75 years of India's independence. So G20 summit will be major milestone for countries' democracy and diplomacy, bestowing to key leadership role in India on the world stage, but stage in strain and thrones both the economic and geopolitical rifts, because lot of challenges in our neighbor countries. There is a lot of changes in the post-pandemic COVID-19 pandemic. India also leading how to tackle the challenges during the last 3 years. There is also economic recessions. Most of the countries are facing, including India. Geopolitical rift is there because we know there is an ongoing war between Russia and Ukraine. Second side, we already have some little confrontation with the China, border disputes, the post-20 Galwan bloodbath. So, lot of geopolitical shift is there. Pakistan issue is also there, Afghanistan, Syria crisis is also part of the world society. In last 5 years, if you look at the what kind of the geopolitical shift, what is the geopolitics, how to shift, where India is stand today, how to India is going to resolve, participate in the global forum, especially these major challenges. But India is still facing some of the geopolitical rift with the one of the neighboring countries, or we can say whatever the rivalry between the India and China. Both are the leading economies of the Asia. So, a lot of challenges for India, how to
manage the border disputes relations with the China and as well as Pakistan. Pakistan is not part of the G20, but there is a lot of challenges we are facing today. So geopolitical front, it's matter for India, especially how to handle, resolve Chinese border disputes. India is going to will host the 18th summit of the G20, New Delhi on 9th and 10th September, upcoming 9th and 10th September 2023. 9 countries guests have already been invited. It is the Bangladesh, Egypt, Mauritius, Nigeria, Netherlands, Oman, Singapore, Spain and UAE. Most of the countries are the India's strategic partners. In addition, International Solar Alliances ISA, Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI and Asian Development Bank ADB are also invited as guest international organizations in this upcoming visit in India, upcoming summit in India. So it is the grand event for India. India is expected to host 215 events at 55 different locations across the country, including in Delhi, Rajasthan, Kashmir, Ladakh, Bodh Gaya. Many more is there about the meeting places, their locations. G20 world will be represented by the 42 delegations of the ministers and officials across the world. This summit in September 2023 will bring nearly 12,000 international delegates, media security, associated personnel into the Delhi, because the end of the summit, G20 leaders will arrive India to participate in this summit. So, if you look at New Delhi Summit 2023, it is the great events for historical achievements in this year. That is the 18th G20 Summit. Head of the state government will participate on 9th and 10th September 23 in New Delhi. Summit will culminations all the process meetings through the ministers, senior officials, civil servants, civil societies, many more things there. Declarations, New Delhi declaration is more significance because Chinese, including Chinese president, will also here. He is also invited for this summit. So, leaders' commitment toward the priorities discussed agreed upon during the respective ministerial and working groups meetings. Amitabh Kant, G20 Sherpa, already has started the discussion series of discussions. First started in Udaipur, Rajasthan. It was the December 4th to 7th. It already started when India, the presidential tenure started in December 1st. So it is the 4th and to 7th December, the first G20 Sherpa discussions meetings in India, in Rajasthan, especially Udaipur. It already begins. You look at this picture. There is a lot of discussions. The first Sherpa meetings, Udaipur, with the foreign delegates. Many more there with the objectives agenda, the Vasudev Kutumbakam. It is the message for the historical message from the Vedic and ancient culture and civilizations, the Vasudev Kutumbakam. That means one earth, one family, one future. Nobody can distinguish whatever we are addressing, how to addressing the common challenges. So these figures explained how India is ready to discuss the groupings, through the groupings, different locations, participants, delegates for the final summit in September. Look at this picture. It is very unique. There is a representations of India's identity in the global community. Also, the climate change
environmental issue is there. So that's why India is considered the one planet, one future. This is the final venue for summit of 2023. It is the G20 Summit. So all the officials are preparing for complete the process for this summit. We can say G20 is the very great event, grand event for India to represent itself. It's a responsibility, accountability towards the world society. How to challenge, how to address the challenges of the world society. We say G20 has emerged the world's largest premier for economic cooperations, also for comprehensive integrated narrative for a strong, sustainable, balanced growth. G20 made a serious contributions to making globalization fairer and more sustainable while transforming the process of international negotiations. We know the process of globalizations, a wave of globalizations, it is very important for any society. Doesn't matter if it is the Asian society, European society, or American society, or Chinese society. But except Chinese society, because a lot of restrictions are there. Whatever the fruits, challenges, advantage and disadvantage of the globalizations, we can easily identify in the democratic countries, the group of democratic countries, how peoples are going to benefit from the globalizations. Doesn't matter in the political globalizations, cultural globalization, or economic globalizations. So yes, globalizations shows the path for cooperations, integrations of international economic cooperations. So G20 has major contribution to setting global governance agenda. Today, India is ready to welcome leaders of G20 in September, upcoming September. That is very important historical events for world largest democracy. Let's see how India going to address these challenges in the era of globalization of 21st century. Thank you. A warm welcome to IGNOU. If you are creative, if you can write well, and if you can visualize, mass communication is the correct career option for you. I am going to talk about postgraduate diploma in journalism and mass communication, which is also the first year of MA program in journalism and mass communication. So any learner who has done a postgraduate diploma in journalism and mass communication is eligible to take admission straight away into the second year of our master's program in journalism and mass communication. Duration to complete this program is minimum 1 year, and because we have this inherent flexibility in distance education system, you can take up to 3 years to complete this program. The minimum eligibility criteria for taking admission in this program is bachelor's in any discipline. To give you a glimpse of what are the various components of this program, we begin with telling you what mass communication is, what are the various areas, various branches of mass communication. Then we go on to tell you about the various reporting techniques and beats of reporting, followed by media ethics, the principles, the codes of conduct that you must follow, and we also focus on the writing skills and editing skills for print media. Now this program comprises of 8 courses of 4 credits each. 25% of the entire program is practical based. So we have 6 theory courses and 2 practical courses.
This program is so designed so that it will be able to make you more employable in the market. So it helps you build a career in print media, in radio, television, new media, as well as the allied subjects of mass communication, which could be media marketing, advertising, public relations and corporate communications, event management. This can also help you become an entrepreneur in areas like photography or having your own production house and so on. So I hope that you will be excited to join this program, and we will be waiting to welcome you here in IGNOU. Hello viewers, we are back with you to discuss about a very interesting aspect of research without which any research will not be useful for the general public. I am Professor Neelima Shrivastava with the School of Gender and Development Studies, IGNOU. Along with my colleague, Dr. G. Uma, we are going to discuss report writing in research. This particular topic falls under MWG 005, that is Research Method, a course under MAWGS, that is MA in Women and Gender Studies, and also part of MGS 005, which is Research Methodologies in Gender and Development Studies, which is a course under MAGD, that is MA in Gender and Development Studies. Before we start discussing this important topic, let me explain the learning outcome of this session. After watching this video, you will be familiarized with the techniques of report writing. That is the first thing. Second one is that you could able to distinguish between reporting the results and discussing the findings. Third objective of this session is to develop comprehensive understanding about the structure of report writing, and finally, after listening this entire session, you will acquire knowledge about representing the content, whatever content we write in the report writing, that you could able to understand in a logical manner. These are the 4 objectives of this session. Thank you, Uma, for setting the tone for this session. Now, before proceeding ahead, let's talk about, after all, what is report writing? Because until unless you know what is report writing, you will not be able to proceed successfully. So, to give you in a very precise manner is that how do you organize the findings of your research in a logical, methodological, as well as in a manner which is not subjective or which is not biased. If there is a biased understanding or biased presentation of the findings of the research, it will not qualify for a good report writing. It is also important to understand that what methodology should a researcher adopt to organize his or her research report, especially when it is about the empirical data that has been gathered from the field. Then what chapters should logically follow one after the other, and how to make it into sections and subsections are also part of a good research
report. Then if you want to make it more precise and scientific, then it will be important for you to understand that what should be the research style that a researcher should be adopting. The research style has to be according to the type of research that a researcher has undertaken. For a qualitative research study, the report writing is slightly different than for a research study based on quantitative method of research. So, accordingly, we can say that there can be multiple approaches to organize a report section and a particular section of the report. It may start with presenting a synopsis or the executive summary and also the key findings for people who don't want to go into the details or in depth of the research study. So somebody who is interested in looking at the important findings can find it at the beginning of the report. And then we go into the details of the research by putting them in different chapters, and again there will be a summation of the findings towards the end. Now let us see how to represent the content. Like when you write a research report, there will be, you would like to represent lots of content in the report. That is very important. So how to put that content in the report? All MAGD and MAWGS learners, you must understand that presenting the research report is certainly different from writing various reports. Research report should be very concise, and we have to include only necessary components in the research report. So now let us see how to represent the content. First, in any research report, there should be an introductory background for understanding the results by restarting the research problem of your study. What is your research problem? That has to be represented in the introductory chapter. Next is that we need to include non-textual elements like figures, chart, photos, maps, tables, models, diagrams to further illustrate key findings. These, like instead of giving all textual explanation, when you put the chart, photos, maps, tables, it certainly when someone is read your report, immediately they could able to understand what you are trying to say about, and the results can be easily represented through figures, chart, photos, maps, tables, models, diagrams. That is the third important point to represent the content, is that systematic description of results, highlighting for the reader observation that are most relevant to the topic under investigation. Whatever the topic you have chosen, you have to systematically describe the results. That is very important, and highlight which are whatever the results you have found based on your study. That results has to be highlighted. Then whoever reads your report, immediately they could able to understand the results. That is very important. Another important point is that the page length of your results or sections or chapter is determined by the amount and nature of the data to be reported. That is very important. The next is that report section must focus only on findings that are important and that are related to addressing the central research questions. Whatever you have formulated, whatever the research question you have formulated, that should be, you have to focus only on those things in your findings. You must have collected so many data from the field, but most of the data not, and there is no need to include all those data in the current research report. So you must understand that what is your research question, what is your objectives. Those
two things you have to be very clear. The result should address only these two things. Next important thing is that you have to include short paragraphs that concludes the result section by synthesizing the key findings of the study, and use the past tense while reporting your results. These are the important points. Let us see next important issue we have to see is that what are the things you need to be avoid when writing the results. I may request Professor Srivastava to explain these things. Thank you, Uma. You have very rightly pointed out that what should be the content of a good report. Now, it is important for our learners to know what things they should avoid while writing any research report. First of all, which is very, very important, is that while you are disseminating the results of your finding, you have to just confine yourself to interpretation of the findings of your own results. If you start looking, you can make a comparison. You can draw comparisons, but you cannot make it a focus of your research, because your research is your research. So your research should remain in focus, and you should not be talking more about other researches than your own. So your focus should be to contain your discussion, to contain your research, to highlight the key findings of your own research, along with the background information that you already provided in the first chapter, or when in the beginning of the chapter. So you relate your own findings, your own results with whatever information, background information you have provided, rather than talking time and again about other researches or other field studies that have already taken place. I again repeat, you have to draw from the other studies that what is new, what is different, what is similar with the other studies that have been done in past, to come out with an in-depth understanding of what is being researched by you here now. But your prime focus is to talk about the results of your own research. Then very important thing is that you may indicate a few negative results, but you should not dwell upon it. Because the negative results may be a result of some of the points that you overlook, or that was not the part of your focus of your research, or was not coming into the purview of your study. So you should not be giving lot of importance to the negative aspects, rather than focus on the positive outcomes of your research, so that it adds to the knowledge construction. It leads to better understanding of the phenomenon that is being researched, or that is being disseminated by the researcher or the team of researchers. It is also important that most of the time it so happens that when we are in the field and we gather a lot of data, because any researcher is very much involved in the research process, and we tend to collect lot of data, and not all the data is included in the finding of the research, because some of it may be beyond the scope of the research, some of it may not be directly falling under the purview of the research, or answering the research questions, or related to the objectives. So any such data which has not been processed, and also the data that has not been mined and also cleaned, that should also not be included in your report. That can be kept aside to be included at a later part, when you have more time, when you want to add new dimensions to your research. But it is very important that data that relates to the research problem, thereafter the research questions or the objectives of the research, should be included as part of report writing. That very, very important point that researchers should keep in mind should be to talk about the factual findings, or the facts that have emerged from your field study, and be concise as possible. Nobody has got time to go into detail, because the researcher feels very
passionately about the research and the research process also. So the researchers tend to go in detail about a fact which can be simply stated, because you are part of the research process, so you perhaps become little, or researcher becomes perhaps little emotional about the research process, but the reader is not. The reader is not interested in going into the emotional aspect. They just want the outcome, that what is the learning, what have you achieved, what, how the knowledge can be added to the early existing knowledge, and new knowledge construction takes place. So for these two things, factual reporting of factual information, as well as being concise in your presentation, is a very very important aspect that each researcher has to keep in mind. Another problem that I have very often seen in evaluating research studies of learners and also of research scholars, that researchers tend to repeat their findings as well as data in different forms. They feel that they have made a table, they have made a graph or a chart. So all the representation has to be fitted into the report writing. Sorry, research learners, that is not a very good report, because the reader is not interested in looking at the variety in which you have presented your data. They're interested in looking at what is the outcome of your research, and what have you learned about a particular aspect, attribute in a given chart or a table or a figure. So I would suggest that after looking at all the types of representation of data or presentation of data with you, you decide that which is the best form to put it across to a reader who is reading it for the first time. So if the table is very chaotic, then you put it as a chart where it is more clear. Or if the chart is becoming too chaotic with lot of bars or lot of overlapping lines, then you better put it in a table form. But don't repeat presentation of data, and don't repeat sections also. If you have to repeat, you can always interlink it, that in chapter so and so you read about this, and here we are going ahead from this particular aspect. So in this way, you will be able to hold on to the interest of the reader or other researchers who wish to associate with your dissemination of your the findings of your research, or the result of your research. So these are some of the very commonly found I will not say problems, but I will say that these are the commonly found practices that new researchers should avoid, so that to make a good quality report. Now I would request Dr. G. Uma to discuss about the importance of a section which means the main body of the research, that is the discussion about the findings and interpretations of any research study. Thank you, Professor Nilima Srivastava. Let us see what are the things we need to remember when you write the discussion section. As you understand, research report will have various sections, and you may present your research report in chapter wise. Okay, this now let us see what importance of discussion section. This is very very significant section, because in the discussion section only whatever the results you have obtained from the field, either from the field or using the secondary data, whatever methodology you have adopted, all those data you have obtained, and you need to interpret those data, and you have to present in a certain form. That is, either you need to link your data with the existing theory, or you have to interlink your results with the existing certain data to add more value to your results. So discussion section is very important. The discussion section certainly will give you whether you have done a
good research or not. It will demonstrate how far you could able to achieve to become a researcher. Certainly that will show through the discussion section. So through the discussion section you could able to demonstrate your ability as a researcher. That is the first point. Second one is that whoever does any research, that research should give certain meaning to the meaning, that it gives certain meaning. So you have chosen one problem, then you convert that problem into objectives. To address those objectives, you have chosen certain methodology and you collect the data, and you will interpret those data and present in a discussion section. So your research will provide certain meaning to the existing problem. That will certainly you could able to show that in your discussion section. Next is that you could able to highlight the importance of your study vis-a-vis identifying the existing gaps in your field. That is, next, you could, through the discussion section, you could able to engage the reader in thinking critically about the issues based on evidence, evidence-based interpretation of findings. So, how will you present the evidence-based interpretation? Because you have collected data from the field data, that is the raw data. That raw data you convert those raw data in a meaningful manner. Once you convert that raw data in a meaningful manner, then you provide interpretation to that data. Then those interpretation will engage the reader that that the particular data is giving certain meaning. Those things you can able to demonstrate through evidence-based interpretation of findings in the discussion section. That is very important. Next, let us see what are the writing styles to be followed in the discussion section. Yes. After learning about how to organize your discussion in a report, I am going to give you pointers to the styles of writing your discussion section. Once again, I will repeat that do not be repetitive, because if you are repetitive, the reader will lose interest. So you have to be very careful, as I told you earlier also, in case there is a need to reiterate some particular fact or finding, you can always refer it back to the portion or to the chapter where it has been earlier discussed, and continue the discussion here with respect to the present or the related attribute that you are going to talk about. I give you an example. Suppose we in the background variables, we have already talked about the age or the education or the family type or income of the respondent or the family income. But when we are talking about something in the later chapters where you want to relate to any of these aspects, so it is not required of you to talk about the age profile of the respondents again in this chapter. That the reader has already read in the earlier initial chapters. Now you have to relate that particular attribute to the variable that you are going to now cross-tabulate. Suppose if you are talking about the attitude towards the girl children in a family. So here I want to see what is the effect of the class of the family to which the girl child belong. So the income through which we come to the class factor, that has already been discussed in the variable backgrounds, and now you want to know that what education and family class background has to be matched. So the education of the girl child, you can directly take the data and correlate with the income of the family from variable, rather than again talking about the income of the family in this particular chapter, because it is not required here. We just want to know that how
the income of the family and education of the girl child are related. So move ahead with presentation of data which is related to this particular variable or attribute that you want to discuss in the present chapter. Again, to make your to present your point of view in a very precise and a very focused manner is also a skill that any researcher has to develop to be a good researcher. Because if you are a very good researcher in the field but you are not able to present your findings in a logical, in a cogent, in a very lucid manner, so the efforts will not translate into dissemination of the required quality. For that, each researcher has to develop the skill of report writing, which is why we are holding this whole session on how to write a report for a research study. The next very important thing is that while writing report, one should avoid use of jargons, because in any, especially in academic reports, the use of jargon will tone down the academic rigor of the report, and it will unnecessarily put off the reader that why so many jargons are being where the facts can be simply presented. It is also a good practice to use the present tense, especially talking about the facts that have been found out vis-a-vis this result, whereas the findings of the earlier researches should always be reported in past tense. So I repeat here for the clarity of the learners that because when you write your when you attempt your assignments also, where we give you research study and you have to report it also, we are finding it again and again that some people are confused how to present their own research and how to relate it to the earlier studies. So going by the logic is that your own research should be in the present tense, as well as the earlier studies should be in the past tense. So now it is time for us to talk about that what should not go in the research section, that how should you structure your research section. Uma, can you throw light on this, please? Yes. We have reiterated that you have to, when you organize the research, you have to reiterate the research problem and major findings. That is very important. Rest of the things you have to leave it. And another important thing is that you have to explain the meaning of the findings, why they are important. Only you must concentrate the whatever points I am saying now, that should be the part of your research report, and unnecessarily you should not include rest of the things, and you have to relate your research findings with the similar studies. Only similar studies you have to relate. No need to take various studies, and you have to consider the alternative explanation of your findings. And finally, very important thing, that in your research report you have to acknowledge the limitation of your study, and you have to provide some suggestions for further research. If someone want to continue this research, and what are the things you are not able to include or you are not able to address in this research, that can be addressed by the future research. And I request Professor Srivastava to sum up this session. So the takeaway from this session are: number one, research without report writing is not complete. Secondly, report writing is a systematic process. And thirdly, it is important, writing of the report is important for dissemination of any research. Thank you so much for being with us. I hope this session will be helpful for you when you attempt your assignments, or you take up any research study wherever you are working, and it will be of help to you if you remember the points which we have just discussed. Thank you so much for being with us. Thank you.
you wish to be part of a television studio like this or any other media system, or already part of any media system, want to enhance a new set of skills? Welcome to School of Journalism and New Media Studies. Here in the School of Journalism and New Media Studies, we are offering program for all set of people to learn and enhance their media skills. The vision of School of Journalism and New Media Studies is to generate a new set of professionals in the area of media and communication studies with understanding about role of media in the national development and global understanding. We offer innovative programs in the field of journalism and mass communication that sets the benchmark of high quality learning and teaching process at the national level. We offer these programs across the country with the help of our regional network as well as study center. Same manner, many of our programs are offered through online mode with a sophisticated learning management system. SOGNMS offers programs from PhD in journalism and mass communication till certificate level. We have भाषा चाहे कोई भी हो, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मलयालम, लेकिन भाव नहीं बदलता है। जब भी कोई लेखक अपनी बात कहता है, चाहे वह कविता के माध्यम से हो, चाहे कहानी के माध्यम से, चाहे उपन्यास के माध्यम से, जब वह अपने भावों को व्यक्त करता है तो जिस भी विधा का प्रयोग करता है उसका मूल उद्देश्य यही रहता है कि वह अपने विचारों को जस का तस, जैसा वह महसूस कर रहा है, जैसा वह सोच रहा है, उसी प्रकार से वह पाठक तक और दर्शक तक अपने उसी मनोभाव को उसी रूप में पहुंचाए। तो यह लेखक की जो है मूल जो संवेदना है वह किस तरीके से पाठक तक पहुँचे, लेखन का मूल रूप से यही उद्देश्य माना जाता है। अगर हम बात करते हैं उपन्यासों में, तो उपन्यास जो है, अगर भारतीय उपन्यासों की बात करेंगे तो भारतीय उपन्यासों में चाहे वह उर्दू में लिखा गया उपन्यास हो, चाहे फारसी में, चाहे मलयालम में, चाहे गुजराती में, चाहे अंग्रेजी में, पूरा जो भारतीय परिवेश है उसको किसी भी भाषा के माध्यम से उसके परिवेश को जब व्यक्त किया जाता है और परिवेश के अंतर्गत जो चीज़ें यानी कि लेखक जो कहना चाहता है, जब वह अपनी बात को उसी किसी भी रूप में, चाहे वह कहानी हो, उपन्यास हो, लेखक हो, आत्मकथा हो, जीवनी हो, संस्मरण हो, किसी भी विधा के माध्यम से जो प्रस्तुत करता है, तो वह लेखक उस परिवेश को, उस क्षेत्र को और अपने मनोभाव को जो है कल्पना के माध्यम से पाठक तक पहुंचाता है। तो आज हम जिस उपन्यास की बात करने वाले हैं वह मलयालम भाषा में लिखा गया उपन्यास है जिसका नाम है चेमीन। जी हाँ, आज हम चेमीन उपन्यास पर चर्चा कर रहे हैं। चेमीन उपन्यास के माध्यम से जो है किस प्रकार से जो लेखक है तक्षी शिवशंकर पिल्ले, उन्होंने किस प्रकार से अपने परिवेश को, अपने समाज को व्यक्त किया है, वह आज हम देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे और उस परिवेश का जो है एक उस दौर में जो है हम चले जाएंगे जिस दौर का वर्णन यहाँ पे शिवशंकर पिल्ले ने किया है। तक्षी जी जो है इस उपन्यास के माध्यम से जो है बताना चाहते हैं कि जो हमारा जो समाज है, भारतीय जो समाज है, उसका जो ताना बाना है वह किस प्रकार से बुना गया है और उस ताने बाने में एक व्यक्ति जो है वह किस प्रकार से रह रहा है और उसी रहने में यानी कि व्यक्ति का जो जीवन है
वह किस किस दौर से गुजरते हुए और किन किन भावों से, किन किन संघर्षों से गुजरता है, और कैसे कैसे एक जो मध्यम वर्ग है वह किस प्रकार से अपना जो है जीवन यापन कर रहा है, किस प्रकार के उसके मनोभाव हैं। तो यह जो है उपन्यास जो है मलयालम भाषा में लिखा गया है। और इस उपन्यास को जो है अगर हम कहें कि इसके पूरे कथानक की अगर हम बात करते हैं तो पूरा कथानक जो है एक प्रेम कहानी के इर्द गिर्द बुना गया है। अगर आज हम बात करते हैं प्रासंगिकता की, तो प्रासंगिकता क्या होती है? प्रासंगिकता यानी कि इस उपन्यास की क्या उपयोगिता है, हम इस उपन्यास को क्यों सुने, क्यों हम इस उपन्यास को पढ़े, और इस उपन्यास के माध्यम से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। आखिर यह उपन्यास जो है वह पढ़ा क्यों जाना चाहिए, ऐसा क्या है इसमें। सोशल मीडिया का युग है जिसमें हम जो है सब कुछ सोशल मीडिया पर जो है उपलब्ध हो गया है। आप जो है हर तरह की का जो सामग्री है, या हर तरह की जो अगर हम बात करते हैं फिल्मी दुनिया की, जी हाँ, चैमीन उपन्यास की जब हम बात करेंगे तो फिल्मी जगत है उसकी चर्चा करना एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। आज हमने जो प्रेम की जो कथा जो बुनी है, जब प्रेम का हम जब नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या चित्र जो है वह अंकित होता है? प्रेम, एक लड़का है, एक लड़की है, फिर जो है वह वे दोनों जो है मिलते हैं, उन्हें प्रेम हो जाता है, फिर जो है उनकी शादी होती है, शादी में अड़चन आती है, अड़चन में जो है फिर कोई एक नायक होता है, एक खलनायक होता है, कौन कौन नायक की भूमिका अदा करता है, कौन खलनायक की भूमिका अदा करता है। बात यहाँ पे प्रेम से ज़्यादा एक विवाह जी जो है वह जरूरी है, यानी कि जो प्रेमी है उनका विवाह होना चाहिए, या फिर प्रेम जो है वह तभी संपूर्ण माना जाता है जब उसका मिलन होता है, जब वह वही जो प्रेम है। आज जो प्रेम की जो वर्तमान जो समय है उसमें अगर प्रेम की जो परिभाषा की अगर हम बात करें तो कबीर क्या कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। आखिर यह प्रेम है क्या, और कितनी इसके ऊपर जो है कितने उपन्यास इस पे लिखे जा चुके हैं, कविताएं जो है वो प्रेम पे की जाती हैं, कितने ही कवि आए, कितने ही कवि गए, आज भी जो है प्रेम कविताएं लिखी जा रही हैं, आगे भी लिखी जाती रहेंगी। आज भी जो है वह प्रेम कहानियों पे जो है फिल्में बन रही हैं और सदा बनती रहेंगी। अगर हम इस उपन्यास चैमीन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह हमें क्यों हमें इसे पढ़ना चाहिए, ऐसा इस उपन्यास में क्या है जो उपयोगी है, उपयोगिता क्या है इस उपन्यास की। तो इसमें एक जैसे ही लेखक इस उपन्यास का जो शुरुआत जब करते हैं तक्षित जी, तो क्या दिखाते हैं इस उपन्यास में कि उन्होंने दिखाया है कि दो परिवार हैं जो रह रहे हैं, कहाँ पे, मछुआरे जीवन पर आधारित है यह पूरा उपन्यास। और मछुआरे कौन होते हैं? मछुआरे यानी कि जो समुद्र से मछलियां पकड़ते हैं, और उनका जो है पूरा जीवन यापन जो है वह क्या है, इसी पर आधारित है। किस पे? यानी कि मछलियां वो पकड़ेंगे, उन मछलियों को बेचेंगे, और उसके बाद जो है उनसे जो पैसा आएगा उससे उनका जीवन यापन होगा। तो इस उपन्यास में जो है वह मछुआरे जीवन का चित्रण किया गया है। ये एक इलाका है आलपुषा, ये इलाके का जो है इलाके का नाम है। उस इलाके में क्या है, निकरकुन्नम, समुद्र तट का जो है यह नाम है। और उसी में जो है क्या है, चेम्पन कुंजू नाम का मछुआरा रहता है, और चेम्पन कुंजू और उनकी पत्नी चक्की वे दोनों दिखाया है, चित्र खींचा है लेखक ने, उपन्यासकार ने। उपन्यास की जो है पृष्ठभूमि जब बनाई है उन्होंने, तो पृष्ठभूमि में ही उन्होंने सबसे पहले चेम्पन कुंजू जो है वह किस प्रकार से वह रह रहा है, उन झोपड़ियों का वर्णन किया है समुद्र तट पे कि किस तरीके से वो वहाँ पे जो झोपड़ियाँ बना के रहता है। और उसके साथ साथ में जो है एक दूसरा परिवार भी जो है उन्होंने दिखाया है कि उसका जो बाल सखा है वह जो है उसका वर्णन भी उन्होंने किया है कि एक उनका जो बाल सखा है, बचपन से जो साथ रहते हुए जो पले बड़े हैं चेम्पन कुंजू के, और जो है वो किस प्रकार से जो है दोनों हैं, उनकी उसके जो दोस्त हैं उनकी पत्नी का नाम नल्ला पेणु है। इस तरीके से जो है वह उसका वर्णन वो जो लोग हैं वो यानी उपन्यासकार ने उनका वर्णन किया है। और इसमें सबसे पहले जो चीज़ दिखाई है कि समुद्र में भी यहाँ पे 5 जातियों का वर्णन लेखक ने किया है, जिसमें से कौन कौन सी जाति हैं, इसमें से है अर्य जाति, धीवर जाति, मधुआ, पोतकार और पंच जात। यानी कि ये 5 जातियां हैं
जो समुद्र तट के आसपास रहती हैं। और ये जो छोटी निम्न जातियों का इस यहाँ पे वर्णन किया है कि इन जातियों में से भी जो जाल खरीदेगा, जाल यानी मछली पकड़ने के लिए, और नाव यानी कि जो जो समुद्र में जब नाव के लिए जो यानी कि नाव में बैठ के जाएंगे, नाव और जाल, ये खरीदने का अधिकार भी सबको नहीं है। जी हाँ, जातिगत जो दंश है इस उपन्यास के प्रारंभ में ही लेखक ने व्यक्त कर दिया है कि जातिगत जो चीजें हैं वह किस तरीके से जो है उनकी पृष्ठभूमि तैयार की गई है। यानी कि ये जो जाति है इसमें से जो धीवर जो जाति है वही लोग जो है वह जाल और नाव जो है खरीद सकते हैं, सब लोग ये नहीं खरीद सकते हैं। और जो है इनको भी खरीदने से पहले जो समुदाय है, समुदाय के मुखिया से इनको परमिशन लेनी होगी, तब सिर्फ इस जाति को यह परमिशन दी जाएगी, अनुमति दी जाएगी कि ये लोग जो है समुद्र में जाके मछलियाँ पकड़ सकते हैं। तो उपन्यासकार ने जो है बहुत ही बारीकी से जो है जातिगत दंश को भी इस उपन्यास में जो है वह सबसे पहले ही जो है लिख दिया है। तो क्या कहते हैं कि यहाँ पे चैंपन कुंजू जो है वह क्या करता है कि उसकी जो है 2 बेटियां हैं। एक बेटी जो है करुतमा है और दूसरी बेटी जो है वह पंचमी है। तो इस उपन्यास में उन्होंने दिखाया है कि पंचमी जो है वो छोटी बच्ची है और जो दूसरी जो उनकी बेटी है वह 16-17 साल की हो गई है, करुतमा। तो यानी कि करुतमा जो है वह बड़ी बेटी है और उसके साथ जो है जैसे जब व्यापार करता है इंसान, कोई भी काम करता है तो घर तो आना जाना लगा ही रहता है। तो दूसरी जाति का एक व्यक्ति उनके घर में आना जाना है यानी कि जाल ये व्यापार करने के लिए जिस प्रकार से चैंपन जो है वो अपना काम धाम करता है, तो उनके घर में आना जाना है एक दूसरी जाति के व्यक्ति का। और वह जो है उनका जो बेटा है परिकुट्टी क्या है, वह जो है करता है कि वह साथ साथ खेलता है। तो कुछ बच्चे साथ साथ खेलते हैं, बड़े होते हैं तो लगाव स्वाभाविक हो जाता है। तो इसमें दिखाया है कि किस तरीके से बच्चे वही प्रेम कहानी का एक प्रारूप तैयार किया है, प्लॉट तैयार किया है उपन्यास में कि वो वह जो है वह करुतमा के पास आता है, दोस्ती हो जाती है। और बचपन की दोस्ती जब उस समय में जो है कहा है कि हमारी यानी कि मछुआरा जो जाती है उसमें लगभग 10 साल की लड़की की शादी हो जाती थी। तो वो कहते हैं कि लड़की लेकिन 17 साल की हो गई है, 16-17 साल की है करुतमा यहाँ पे, लेकिन चैंपन को उसकी शादी की कोई चिंता ही नहीं है। ये एक भाव उसमें दिखाया है। और आहिस्ता आहिस्ता से क्या है कि वो जो परिकुट्टी है वह जो है उससे उसके पिता क्या करते हैं कि उससे पैसा उधार लेते हैं। और उधार किस भाव से, उसे पता है कि उसकी बेटी के प्रति उसका झुकाव है और इसी भाव का जो इमोशंस जो भाव है इसी का फ़ायदा उठा के वो है क्या करता है कि वह उससे पैसे उधार लेता है। पैसे उधार लेके वह नाव खरीदता है। नाव खरीदने के बाद जो है वह क्या है खूब जो है उसकी अच्छी इनकम शुरू हो जाती है। अच्छी आमदनी होने से इंसान का जो है वह व्यवहार बदल जाता है। और दिखाया है लेखक ने कि किस तरीके से जब नया नया पैसा हाथ में आता है तो व्यक्ति सबसे पहले क्या करता है। वहाँ इस उपन्यास में जो है दिखाया है कि जो उसकी पत्नी चक्की थी, जो एक आदर्श महिला थी, उसका भी व्यवहार बदल जाता है, उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आ जाता है। वह भी एक अपने पड़ोस की जो है एक सेठ का जो है वह अमीर जो एक महिला है उसका जिक्र करती है और उस कहती है कि वो देखो कितने अच्छे से रहती है, कैसे अपने आप को उसने जो है किस तरीके से उनका जैसा रहन सहन है। जैसा हम देखते हैं अक्सर कि जैसे ही चीज़ें बदलती हैं, जैसे ही व्यक्ति के पास पैसा आता है तो उसका रहने सहने का ढंग, बोल चाल का तरीका वह एकदम से बदल जाता है। किसका? जिसके पास नया नया सा पैसा आता है स्वाभाविक रूप से। यानी कि इसे हम एक दृष्टिकोण लेखक ने दिखाया है कि ये प्रासंगिकता का मतलब क्या है, उपयोगिता। आज भी वो चीज़ें हम अपने आसपास हम देख सकते हैं कि छोटी सी जो है चीज़ मिलते ही व्यक्ति जो है वह किस तरीके से उसके पूरे जो है व्यक्तित्व में परिवर्तन आ जाता है। वह यहाँ पे वही वर्णन किया है। तो चक्की उसकी बेटी शादी लायक है, लेकिन जो है पिता क्या कर रहा है, पिता जो है वह अपने रहन सहन पे उसकी इच्छा होती है, क्या कहता है कि पहले अपना घर बनाना चाहिए और उसके बाद जो है सारी सुख सुविधाएं जुटानी चाहिए, उसके बाद बच्चों की शादी करनी चाहिए। ये एकदम से चैंपन के व्यवहार, जो उसका जो दोस्त है बचपन का, जो वह देखता है उसके व्यवहार को और वह क्या है कि वह उसको क्या बोलता भी है कि ये सब क्या है चैंपन,
तो कहता कि तुम सब लोग तो मुझ पे जलते हो, ईर्ष्या का भाव रखते हो, और इस प्रकार से वह सबके साथ अड़ोसी जो आसपास में जो सब रहते हैं उनके साथ सबसे दुश्मनी पाल लेता है। और जैसे ही एक समय बदलता जाता है, समय के साथ साथ जो है वह और भी ज़्यादा क्रूर होता जाता है। उसका जो व्यवहार है वह और ज़्यादा दुष्टता को लिए हुए अपने आप में समाहित किए हुए रहता है। उसकी जो बेटी है, जो परिकट्टी से प्यार करती, प्रेम में है जिसको दिखाया है उपन्यासकार ने कि वो उसके गहरे प्रेम में है, वो दोनों प्रेम में दीवाने हैं। और जो है उसके बाद जैसे ही वो दूसरी नाव खरीदने, एक नाव आ गई पैसे उधार लेके, दूसरी बात पैसे उधार वाले जो पैसे हैं वह तो देने ही नहीं है, दूसरा दोबारा से पैसे मांगता है और दूसरी नाव ले लेता है। तो एक वहाँ पे एक पोला, तूफान में जो तूफान की तरह से एक बार जो है पोला यहाँ पे वर्णन किया है कि जो है वह क्या होता है, वह जो है आता है, कहाँ पे आता है, समुद्र में। और जो है लोगों की जो मछलियाँ हैं जो है मरनी शुरू हो जाती हैं, एकदम फाके की स्थिति आ जाती हैं। लोगों ने जो जमा पूंजी ने इकट्ठी कर रखी थी वह पूंजी भी जो है वह ख़त्म हो जाती है लोगों के पास, और कुछ भी नहीं रहता है। उस समय भी जो है वह उस एक जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वह उनको पैसा देना होता है, लेकिन उस समय पे जो है वह चैंपियन का व्यवहार बहुत बदल जाता है और वह बहुत क्रूर हो जाता है और उन लोगों को पैसा देने में भी आनाकानी करने लगता है। जिससे क्या है कि एक सीधा साधा सा व्यक्ति जो जीवन में जिसे लगता था कि सामान्य सा जीवन जो है वह जी रहा था, कैसे कैसे वह अपने दिमाग बुद्धि का प्रयोग करके, चालाकियों का प्रयोग करके एक से एक चीज़ जो है वह दूसरों के पैसे से ही ले लेता है, और अपने ही जो है अपनी ही संतान, अपनी ही बेटी के जो भाव हैं उनका नाजायज फ़ायदा उठाते हुए एक किस प्रकार की धृष्टता करते हुए भी वह खुश है। इस भाव का वर्णन आज ऐसे लोगों की संख्या किस प्रकार से बढ़ रही है, यानी कि प्रासंगिकता का क्या मतलब है। आज हम ये मनोभाव जो है इसका वर्णन यहाँ पे जो है लेखक ने किया है। जिसके बाद जो है एक समुद्र में जाता है, जाते समय जब तूफान सा आता है तो वह क्या है कि एक लड़के को, एक नाविक को देखता है कि वह दृढ़ता के साथ नाव को लिए चला रहा है, पोत रहा है, और इस चारों तरफ से तूफान है लेकिन उसमें भी वह अडिग है। तो वह उस लड़के से मिलता है और उसको जो है उसका नाम है पलनी। वह कहाँ का है, वह तक्षकुन्सा जो है वहाँ का पतवार चालक है। तो वो चैंपियन उससे काफ़ी प्रभावित होता है और उसे अपने घर आमंत्रण देता है, बुलाता है उसे, और उसकी वीरता की जो चर्चा जो है वह क्या है, वह अपनी पत्नी के सामने भी करता है। और जब एक दिन उसको बुलाया जाता है तो खूब अच्छे से उसको खाना पीना खिलाया जाता है। और पलनी जो है अनाथ लड़का है, कमाता है लेकिन अनाथ है। तो पलनी से जो है वह देखता है कि किस तरीके से परिवार है, घर है। वह अकेला रहता था, न उसका खाने का समय, न पीने का समय, न रहने का कोई तौर तरीका। तो वह देखता है कि किस तरीके से एक परिवार होने से इंसान किस तरीके से सुकून से रह सकता है। तो उसके जो पलनी की जो माँ है चक्की वह, और पलनी की नहीं करुतम्मा की जो माँ है चक्की, और करुतम्मा के जो पिता है चैंपियन, वह बात करते हैं पलनी से उसकी सगाई तय कर देते हैं। और सगाई भी किस में, सगाई एकदम से उसको दहेज नहीं चाहिए। लड़का बोल देता है कि मुझे दहेज नहीं चाहिए, और तो वह सगाई पक्की हो जाती है। लेकिन इसी बीच में करुतम्मा कहती है कि तुमने जो परिकट्टी से जो पैसा लिया उसका वापस करो। तो पिता देना नहीं चाहता है। तो वो करुतम्मा क्या करती है कि वो घर के जो पैसे जो शादी के लिए उसके जोड़े हुए थे तो वह लेके वह एक दिन जो है वह अपना जो दोस्त है परिकुट्टी उसको वह पैसे वापस लौटा देती है। उसकी माँ देखती है कि अगर उसके पिता ने देख लिया तो क्या है, वहाँ हत्या हो जाएगी। पैसे का इतना लालची है उसका पिता। चक्की ये बात अच्छे से समझ चुकी थी। तो वह क्या कहती है कि जो है किसी भी तरीके से इस चीज़ को जो है वह न होने दिया जाए। चाकरा एक त्यौहार है जिसका वर्णन यहाँ पे लेखक ने किया कि जो चाकरा आता है, जैसे दीपावली है, दशहरा की, इस तरह का एक त्यौहार है। तो उन्होंने कहा है कि त्यौहार जब आता है तो लोग कपड़े खरीदते हैं, अच्छी चीज़ें खरीदते हैं। उसी दौरान जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो परिवार खरीदता है और उसकी शादी तय हो जाती है। निश्चित समय पर जब शादी होने वाली होती है तो उसी समय पे जो है वह जो है दिखाया है कि किस प्रकार से जिस लड़के से वह प्रेम करती है उससे मिलती है। कितनी घटनाएं घटती हैं समाज में कि बच्चे हैं उनसे प्रेम हो गया है, लड़कियां जो है इसमें एक दिखाया है एक भाव कि वो भाग जाना,
भाग जाना शब्द जब प्रयोग होता है किसी भी लड़की के लिए तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो है उसकी माँ कहती है, क्या तुम मुसलमान लड़के को छोड़कर नहीं जाना चाहती हो? तो कहती है, वो जो है करुतम्मा नीचे नजरें झुका लेती है। यानी कि यह एक जो समाज का एक यथार्थ है, समाज का जो एक ऐसा सच है जिसे हर माँ बाप को जो है इस चीज़ का सबसे ज़्यादा रहता है, कहीं बच्चा मेरा, बच्चा बेटा नहीं, बेटी, बेटी जो है जब प्रेम में जब होता है, या जिस प्रेम का हम चर्चा कर रहे हैं, जो एक मनोभाव है और जिसकी एक परिकल्पना जो है वह दिमाग में बच्चों के या फिर बड़ों के भी एक ऐसी परिकल्पना कर दी गई है कि एक लड़का और लड़की वही वाला प्रेम है, वही उसी को प्रेम की संज्ञा दी गई है और उसी प्रेम का जो चित्र जो है वह खींच दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि एक मछुआरे जीवन में एक इन लोगों की यौन शुचिता अवधारणा का वर्णन यहाँ पे किया है कि जब तक समुद्र में तब तक तूफान नहीं आएगा, समुद्र में तब तक कोई भी व्यक्ति डूब के नहीं मर सकता या किसी की भी नाव नहीं डूब सकती अगर उसकी पत्नी जो है वह पतिव्रत धर्म का पालन करती है। यहाँ पे जो है महिलाओं के लिए जो यौन सुचिता, शादी से पहले किसी भी पुरुष के संपर्क में नहीं आना, उसे सिर्फ और सिर्फ एकनिष्ठ रहना है, यही उसकी पवित्रता है, यही उसकी निजता है। इस भाव का वर्णन यहाँ पे लेखक ने किया है कि किस तरीके से जो है, जैसे ही करुतम्मा की शादी होती है तो वहाँ पे जब जाती है तो पहली बात तो जो जब वहाँ से पलनी जो है जब बारात लेके आता है उसे लेने के लिए, तो वहाँ से कोई महिला नहीं आती, तो चर्चा का विषय बन जाता है। उसके बाद जैसे ही शादी होके जाती है उधर, तो इधर से भी जो है उसे कोई मायके वाले लेने के लिए नहीं आते हैं। अलग अलग समाज की अलग अलग परंपराएं होती है। तो इस परंपरा होती है कि लड़की की सिर्फ शादी होके जाती है तो उसके भाई उसको तुरंत उसको पा फेरा बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उसको लेने के लिए आते हैं। लेकिन क्या करुतम्मा के साथ ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ की महिलाएं चर्चा करती हैं, यार शादी तो हो गई है लेकिन इसको लेने के लिए कोई नहीं आया, इसका मतलब कुछ ना कुछ लड़की में खोट है, कुछ ना कुछ कमी है। और ये इस तरीके का जो माहौल है यह सामान्यतः हम हर जगह पे देख सकते हैं। तो इसका वर्णन भी यहाँ पे कि उसके दौरान जो है कि इसका किसी से दूसरे से प्रेम रहा होगा, तभी से माँ बाप नहीं पूछते हैं और जरूर कुछ ना कुछ खोट है। तो इससे पहले आहिस्ता आहिस्ता से बात जो है वह किस तक पहुँचती है, आहिस्ता आहिस्ता से बात जो है वह पहुँच जाती है। कब तक जो चीज़ें जो हैं छुप नहीं सकती हैं। तो यानी कि यह जो बात है यह पलनी तक पहुँचती है। पलनी को बड़ा गुस्सा आता है और एक उसकी माँ की जब मृत्यु हो जाती है, चक्की की मृत्यु हो जाती है कुछ समय के बाद, और चक्की की मृत्यु के बाद जो है वह जो परिकट्टी है वह बताने के लिए आता है। तो सोचता है पलनी कि जब चक्की की माँ की मृत्यु हुई है तो इसके ससुराल, इसके मायके से सिर्फ यही क्यों आया? ऐसा क्या, किस तरीके का ये जो क्या जो चीज़ें हैं ये कैसे कैसे एक दूसरे में घालमेल करते 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 जो है, अगर हम पिंजर उपन्यास की बात करते तो पिंजर उपन्यास में भी यही दिखाया गया है कि किस तरीके से जो है एक लड़की है वह किसी लड़के के साथ जिसकी शादी होने वाली थी उसके साथ उसकी शादी नहीं होती है और कोई उसका अपहरण करके लेके जाता है। और अपहरण करने के बाद जो है वह क्या होता है, अपहरण करने के बाद जिस लड़के के साथ, जिस मुस्लिम लड़के के साथ वह रहती है तो उसी से उसका प्रेम हो जाता है और अंत में वह उसे छोड़ के जाने को तैयार नहीं होती है। तो इसी तरीके से जो है पलनी उससे पूछता भी है। उसकी बहन आई हुई है पंच में, तो उसके बाद वह अपनी बहन को ले आती है और उसकी एक छोटी सी बच्ची है करुतम्मा की छोटी सी बच्ची है और चारों तरफ जो है एक राग अलापा जा रहा है कि यह किसी दूसरे से प्रेम करती थी, यह अच्छी स्त्री नहीं है, ऐसी स्त्रियों के होते ही जो है वह समुद्र का विनाश हो जाएगा। समुद्र का जब विनाश होगा तो सब लोग भूखे मरेंगे, यानी कि जब बाढ़ आ जाएगी और जैसे ही कुछ अनहोनी होगी तो वह क्या है, यह लड़की ही जिम्मेदार रहेगी। और इसी के दौरान लेखक ने दिखाया है कि किस तरीके से जो है वह चाह के भी पूरी एकनिष्ठ रहते हुए भी उसे बार बार इस चीज़ को उसे याद दिलाया जाता रहता है कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। और जो है इसी वजह से उसके परिवार वाले उससे पूछते नहीं हैं और इसी वजह से क्या है कि वह अपने मायके वालों की तरफ भी नहीं जा सकती है, जबकि उसने शादी तो पिता की मर्जी से की है, पूरी एकनिष्ठता के साथ वह निभा रही है। लेकिन नहीं, एक चारित्रिक जो परिभाषा जो बना दी गई है वह जो परिभाषा है, क्या हम उस चौखटे से बाहर निकले हैं? चेमीन उपन्यास की प्रासंगिकता का मतलब ही यही है कि आज भी
जो स्त्री के लिए जो कहा जाता है कि उसका जो है चरित्र में उसका व्यक्तित्व, उसका व्यवहार, उसकी अस्मिता, उसका वजूद, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका नौकरी पेशा होना, उसका आत्मनिर्भर होना। नौकरी पेशा वही आत्मनिर्भरता है। किसी भी तरीके का काम करके अगर स्त्री आत्मनिर्भर है तब भी उसके चरित्र की परिभाषा इसी चीज से नापी जाती है। क्या यह सच नहीं है? क्या यह यथार्थ नहीं है? और जब यही यथार्थ है और यही सच है तो क्या ये सही है? इस तरह का सवाल यह उपन्यास उठाता है। करुतम्मा का जो पात्र यानी कि एक स्त्री का करुतम्मा के माध्यम से तक्षी ने जो है पूरे समाज की स्त्रियों का चरित्र हमारे समक्ष रखा है। उसका व्यक्तित्व पूरा हमारे समाज के सामने रखा है कि एक स्त्री जो है उसकी जो है वास्तविक जो है परिभाषा क्या होनी चाहिए। आधुनिक समाज में भी आज हम कहते हैं कि 21वीं सदी में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज जो है महिलाओं के लिए जो है उनका विकास किया जा रहा है, वह बहुत आगे बढ़ चुकी है। उन्हें काफ़ी जो है समाज का जो है एक आईना बन चुकी है। आज बेटे बेटी में कोई अंतर नहीं है। तरह तरह के मुद्दों पे हम चर्चाएं करते हैं, तरह तरह के मुद्दों पे हम विचार विमर्श करते हैं और तरह तरह की चीज़ों को रखा भी जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो चरित्र की जो परिभाषा है वह सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ से क्यों नापी जाती है? यही कि एक स्त्री से ही यह अपेक्षा क्यों की जाती है कि वह एक पुरुष के प्रति एकनिष्ठ रहेगी। आज भी यह जो मान्यता है ये हमारे समाज में देखी जा सकती है। तो प्रासंगिकता का मतलब यही है। चैमिन उपन्यास के माध्यम से जो है तक्षी शिवशंकर पिल्ले ने यही दिखाया है कि करुतम्मा का पात्र नहीं है। वह हर मध्यम वर्गीय बेटी का पात्र है जिससे यही अपेक्षा की जाती है कि वह उसका एक दायरा है, वह उसी में रहेगी। और उसका जो परिवार भी जो है वह जरूरी नहीं है कि अगर पिता है तो वह उसका जो है आर्थिक रूप से भी आज हम देखते हैं समाज में ऐसी बहुत सी चीज़ें आज हम देखने को मिलती हैं कि किस तरीके से जो है भावनात्मक जो है वह शोषण होता है। भावनात्मक शोषण के चलते जो है बच्चा जो है वह क्योंकि माता पिता से ज़्यादा भरोसा बच्चा किस पे करेगा? माता पिता पे ही वह सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता है। माता पिता ही उसके सबसे ज़्यादा अपने होते भी हैं और होने भी चाहिए। लेकिन माता पिता के मूल्य भी किस तरीके से बदल रहे हैं यह इस उपन्यास में जो है तक्षी शिवशंकर ने दिखाया है। विशेषकर बेटियों के प्रति जो है उनका जो दृष्टिकोण है वह किस तरीके का दृष्टिकोण है वह इस उपन्यास के माध्यम से तक्षी शिवशंकर पिल्ले ने दिखाया है। और ये जो मान्यताएं हैं, ये जो आर्थिक जो पृष्ठभूमि है वह मध्यम वर्ग का पिता किस तरीके से जो है वह अपनी ही बेटियों का जो है भावनात्मक शोषण करता है और किस तरीके से जो है ये चीज़ें हमें सारे संपूर्ण समाज में हमें देखने को मिलती हैं। तो यह उपन्यास जो है एक भारतीय पृष्ठभूमि का उपन्यास है। यह जो उपन्यास है यह एक प्रेम कहानी के माध्यम से ऐसा अक्ष इस उपन्यास में खींचा गया है कि अंत में देखते हैं कि करुतम्मा जो है घर से बाहर निकलती है, उधर से जो है परिकट्टी आता है, दोनों का मिलन दिखाया है अंत में। और जो है जैसे ही वो मिलते हैं तो बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है। उधर पलनी की नाव को जो है शार्क मछली के जिसमें उसका वो जाल जो है फंस जाता है और वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अंत में जो है इधर भी जो है किनारे पर जो है परिकट्टी की और करुतम्मा की लाश मिलती है। यह उपन्यास का अंत है जो काफ़ी दर्दनाक अंत है। और ऐसे ही चित्र, ऐसे ही दृश्य आज भी हमारे समाज में देखे जा सकते हैं। तो यह थी इस उपन्यास की प्रासंगिकता और इस उपन्यास की उपयोगिता। We wear clothes on a daily basis. But have we ever wondered, where do our clothes come from?
Who makes our clothing? And who are the people and the process responsible for the whole manufacturing of our clothing? If you want to know more about this, Indira Gandhi National Open University from the School of Continuing Education has launched a program which is Certificate in Apparel Merchandising. There are many benefits after doing this program. You can become a designer in various fields. It can be fashion designer, apparel designer, costume designer, or even a textile designer. One can also work as a fashion consultant. Research and development is another field which one can take up after doing this certificate course. Going into academics is another perk after doing this program. Getting into fashion houses or fashion studios as an intern is also a very good option post doing the certificate in apparel merchandising. The basic eligibility of the program is 10+2. The duration of the program is 6 months to 2 years. The program is also available for both the admission cycles, which is July and January. The exams are conducted twice a year, in June and December. So what are you waiting for? Join this program and get an enriching knowledge in the field of apparel merchandising. And to do so, you can log on to the official website of the university, www.ignou.ac.in. मोअज़्ज़िज़ सामईन और अज़ीज़ तलबा तलबात, आदाब। मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह आज बीए के एक कोर्स जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की सुहाने निगारी और यादगार गालिब, इस पर गुफ्तगू करेंगे। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली किसी उर्दू अदब में किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपने वो ज़माना देखा जो एक मामूली सा इंसान जिस मकाम को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है। मौलाना हाली का साले वलादत यानी कि उनका पैदाइश का जो साल है वो एक उर्दू अदब में बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अंग्रेज़ हुक्मरान ने उर्दू ज़बान की अहमियत को तस्लीम करते हुए इसको फ़ारसी की जगह सरकारी ज़बान करार दिया था, यानी 1835। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की वलादत 1835 में पानीपत में हुई। इब्तदाई तालीम घर पर, उसके बाद दिल्ली और फिर वापस पानीपत चले जाना, फिर दिल्ली आना, दिल्ली में नवाब शिफ्ता के बच्चों के अतालिक मुकर्रर होना। ऐसे उतार चढ़ाव देखे कि उन्हें हमेशा रोज़गार के लिए इधर से उधर भागना पड़ा। मिर्ज़ा सिफ्ता के इंतकाल के बाद में उनका आमदनी का ज़रिया ख़त्म हो गया और मौलाना ने लाहौर का रुख किया। इससे कबल अगर देखा जाए, तफसील से बात की जाए, तो हिसार यानी कि हरियाणा के हिसार कमिश्नरी में एक मामूली से क्लर्क की नौकरी इख्तियार की और हिसार में रहते हुए
जद्दोजहद आज़ादी यानी कि हिंदुस्तानी तारीख़ में जो पहला आज़ादी के लिए कदम था, यानी कि पहली जंग आज़ादी 1857, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हिसार में रहते हुए उस हंगामे को अपनी आंखों से देखा था। बचते बचाते किसी वजह से पानीपत आ गए। चूँकि पानीपत उस वक्त इतना बड़ा शहर या वहाँ रोज़गार के मौके नहीं थे, फिर रोज़गार की तलाश में दिल्ली का रुख किया और अजमेरी गेट के पास में एंग्लो अरबिक जो स्कूल है उसमें 65 रुपये माहवार के तनख्वाह पे एक मौलिम की नौकरी इख्तियार की। लेकिन मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कुछ और ही सोच रखा था। दर्स व तदरीस, शायर तो थे ही, शायर होने के साथ साथ आप एक बड़े नस्र निगार भी हैं। वैसे तो हाली की बहुत सारी तसानीफ़ है। हाली ने शायरी में एक से बढ़कर एक नज़्म, जिनमें हिंदुस्तानी अनासिर, हुब्बुल वतनी और दीगर सियासी, समाजी और इक़्तिसादी हालात को बेहद खूबसूरती के साथ में बरता है, यानी इस्तेमाल किया है। शायर के मुतालिक कहा जाता है कि शायर अपने अहद का तर्जमान होता है। मुआसरे से अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द जो देखता है, जो गुज़रती है, उसी को शायरी का उन्वान बनाकर पेश कर देता है। हाली ने पेश तो किया, उन्वान बना करके पेश तो किया, लेकिन दीगर शोरा से मुख्तलिफ। हालांकि उस अहद के एक और बड़े शायर यानी उनके उस्ताद मिर्ज़ा गालिब, मोमिन खां मोमिन और इस्माइल मेरठी, जो एक मतलब उर्दू में बच्चों के अदब के लिए बहुत मशहूर व मकबूल है। हाली ने इन सब से अलग हटकर अपनी शायरी के उन्वानात तय किए। बहुत जद्दोजहद करने के बाद जब दिल्ली में एक बार उनकी मुलाकात रियासत हैदराबाद के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई और उन तक किसी वजह से ये बात पहुंची कि एक इतना बड़ा अदीब जो माली दुश्वारियों का सामना कर रहा है, तो हैदराबाद के वज़ीर आज़म ने मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का वजीफ़ा 75 रुपये माहवार मुकर्रर कर दिया। कुछ हद तक माली दुश्वारी तो ख़त्म हो गई। ये वो ज़माना है जब 75 रुपया एक बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन किन्हीं वजूहात के वजह से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली दिल्ली को खैरबाद कह करके लाहौर में चले गए। लाहौर में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने वहाँ के एजुकेशन डायरेक्टर से मिलकर पहले ही एक अंजुमन का क़याम कर लिया था। उर्दू अदब की तारीख़ में ये अंजुमन अंजुमन पंजाब के नाम से मशहूर है। इसके तहत एक नई शुरुआत की गई, यानी कि शोरा को पहले उन्वान दिया जाता था, यानी कि जिस शायर को जो उन्वान दिया उसी पर नज़्म लिख कर लानी है। ये इतना कामयाब रहा कि ख़ुद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसमें 4 नज़में लिखी, जो उर्दू शायरी की ख़ास करके नज़्म निगारी की दुनिया में
शाहकार का दर्जा रखती है। ऐसे वक्त गुज़रता गया। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली चूँकि एक बड़े और अच्छे नस्र निगार भी थे, और होते भी क्यों ना, क्योंकि उनके उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा गालिब भी एक अच्छे नस्र निगार थे, यानी कि ख़ुतूत गालिब उर्दू अदब में जदीद नस्र की दुनिया में संगे मील की हैसियत रखते हैं। तो अपने उस्ताद मोहतरम के असरात कबूल करते हुए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी उर्दू नस्र में एक से बढ़कर एक तसानीफ़ उर्दू अदब की तारीख़ में दी। वैसे तो मौलाना की कई स्वानह उर्दू अदब में बहुत मशहूर है, लेकिन यादगार गालिब जो यानी मिर्ज़ा गालिब उनके उस्ताद भी थे, यादगार गालिब अपने उस्ताद मोहतरम की स्वानह है। एक अच्छा स्वानह निगार वो होता है जो बारीक से बारीक, छोटी से छोटी बात को भी अगर किसी की स्वानह लिख रहे हैं तो उसको बेबाकी से पेश करे, यानी कि तासुबाना या हमदर्दाना उस पर रवैया इख्तियार ना करे। यादगार गालिब 1897 यानी कि 1897 में शाये होती है, यानी कि पब्लिश होती है। और जब ये शाये होकर मंजर आम पर आई तो उर्दू नस्र निगारी की दुनिया में एक इसने तहलका मचा दिया। यानी हम अदबी तौर पर इस जुमले को यूँ कह सकते हैं कि उर्दू के पहले स्वानह निगार मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और मौलाना शिबली नुमानी हैं। हाली ने हयात सैदी, हयात जावेद के नाम से भी उर्दू में सवानें लिखी है, लेकिन उनकी सवानें यादगार गालिब बहुत मशहूर और मकबूल रही। मौलाना हाली ने इसकी नस्र में ऐसे सादे सलीस आवाम में बरते जाने वाले, यानी कि आवाम में राइज अल्फाज का इंतखाब किया, उनको इस्तेमाल किया, यानी कि उनकी नस्र बहुत सादा नस्र है। इस बात का सबक भी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने उस्ताद मिर्ज़ा गालिब ही से लिया था। कहते हैं कि मिर्ज़ा गालिब ने अल्ताफ़ हुसैन हाली से कहा था कि आवाम में जब अपनी कोई तसानीफ़ यानी कोई शायरी का मजमुआ या नसरी कोई मजमुआ आवाम के सामने जाता है और उस शायरी को या उस नस्र को कम तालीम याफ्ता इंसान भी बासानी से पढ़ लेता तो समझ लीजिए उसकी मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आवाम के करीब जो नस्र है उसको इस्तेमाल करो। और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने उस बात को मद्देनज़र रखते हुए यादगार गालिब में बिल्कुल सादा, आम फहम, सलीस ऐसे अल्फाज का इंतखाब किया। और चूँकि यादगार गालिब मिर्ज़ा गालिब की सवानें हैं, हिंदी में इसको जीवनी भी कहते हैं, लेकिन मिर्ज़ा गालिब की इस सवाने यानी कि यादगार गालिब में मौलाना हाली ने इतनी बारीक बीनी से काम लिया है कि शुरू में जब वो तारुफ कराते हैं तो बकौल मिर्ज़ा गालिब कहते हैं, आगरा के एक सेठ जो बहुत बड़े सेठ होते हैं
उनसे अपने ख़ानदानी सिलसिले को जोड़कर कहते हैं कि आपके परदादा और मेरे परदादा आगरा में एक परगना के जो है मालिक थे, यानी कि उनके मातहत एक परगना आता था और 16,000 या 12,000 रुपये उनकी सरकारी जो आमदनी थी वो हुआ करती थी। उसको याद दिलाते हुए कहते हैं कि आपको शायद याद ना हो कि ये आगरा में एक कटरे का जिक्र करते हैं कि आपके परदादा और मेरे परदादा के घर में, घर के दरमियान 2 कटरे थे। उन्हीं एक कटरे में एक रंडी का भी एक मकान बीच में पड़ता था। इस बात को बहुत बेबाकी से कह देते हैं मौलाना हाली। और उसी के मुतालिक ऐसे बिल्कुल मौदीवाना और बिल्कुल साफ गोई से इस तरह बयान करते हैं कि मिर्ज़ा गालिब चूँकि उस वक्त माली दुश्वारियों का सामना कर रहे थे और आगरा के वो सेठ, यानी कि उनको किस चीज़ की कमी नहीं थी, उनके पास में कोई माली दुश्वारियों का उनको कोई दिक्कत नहीं थी, इसलिए मिर्ज़ा गालिब ने उनको याद दिलाया है और हालांकि उनसे किसी चीज़ का तकाजा नहीं किया। ये मिर्ज़ा गालिब की ख़ुदगर्ज़ी यादगार गालिब में हमारे सामने आती है। यादगार गालिब अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कुछ वाक़यात ऐसे तहरीर किए हैं, कुछ ऐसे वाक़यात कलमबंद किए हैं जो उन्होंने अपने उस्ताद को खुद करते हुए देखा था, यानी कि क्योंकि उस हाली गालिब के शागिर्द थे, ऐसी बात को उन्होंने उसको कभी छुपाया नहीं, यानी कि नज़रअंदाज नहीं किया। इसलिए कि अगर नज़रअंदाज करेंगे तो उस अहद के दीगर नस्र निगार, दीगर शोरा उस पर उंगली उठाएंगे। लिहाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बहुत साफ गोई से छोटी से छोटी बात को बहुत ही मुअद्दिबाना अदबी तौर पर तहरीर किया है। मिर्ज़ा गालिब जो बचपन में यतीम हो गए थे और उनको फिरोजपुर झिरका जो अब पंजाब में है, वहाँ के नवाब सूबेदार से उनको पेंशन मिला करती थी। वो पेंशन मुश्तरका तौर पर दी जाती थी, यानी कि उनके चाचाजाद भाई और उनके ख़ानदान के दीगर अफराद उसमें शामिल थे। वो भी बंद हो गई। तब मिर्ज़ा गालिब ने सफ़र कलकत्ता किया, यानी कलकत्ता के सफ़र का आगाज़ किया, क्योंकि ये आपके याद दिला दूँ कि उस वक्त हिंदुस्तान की दारुल सल्तनत यानी कि राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो कलकत्ता जाते वक्त मिर्ज़ा गालिब ने बहुत सारी दुश्वारियों का सामना किया, चूँकि उस वक्त तक हिंदुस्तान में ट्रेन, रेलगाड़ी का आगाज़ नहीं हुआ था। दूसरे ज़राए जो जिनके ज़रिए सफ़र करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, मिर्ज़ा गालिब ने उन्हें इख्तियार किया। कानपुर पहुंचने के बाद में मिर्ज़ा गालिब को ये बात याद आई कि अहले लखनऊ मुझे हमेशा बुलाते हैं गुफ्तगू करने के अंदाज से। तो मिर्ज़ा गालिब ने कानपुर ही से अहले लखनऊ को एक दावतनामा, एक उनको इत्तला दी कि हम यानी कि कानपुर में हैं और अपना अगला क़याम लखनऊ में होगा। अहले लखनऊ ने मिर्ज़ा गालिब की बहुत इज़्ज़त की, उनका इस्तक़बाल किया, हौसला अफ़ज़ाई की और कई अहम मानों पर
उनसे गुफ्तगू की, कई मुद्दों पर बातचीत की। मिर्ज़ा गालिब ने वहाँ भी अहले लखनऊ से मतलब पे वो गालिब ही रहे। यूँ कह सकते हैं कि वो अहले लखनऊ पर गालिब ही रहे। जैसे अहले लखनऊ ने उनसे पूछा कि हम दूसरों के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, आप तई का इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब भी मिर्ज़ा गालिब ने बहुत खूबसूरती के साथ में और अदबी तौर पर दिया। हालांकि जवाब गैर मयारी भी है, क्योंकि उसमें कई अल्फाज ऐसे आ सकते हैं जिसको यहाँ पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन मिर्ज़ा गालिब ने वहाँ पर भी अहले दिल्ली की मकबूलियत, अहले दिल्ली का बड़प्पन, अहले दिल्ली की सलाहियत को बरकरार रखा। लखनऊ से कलकत्ता का सफ़र किया तो कलकत्ता वालों ने भी उनकी बहुत इस बात को लेकर वो हौसला अफजाई की कि मोहतरम, आपकी पेंशन शुरू कर दी जाएगी और हम भी वायसराय से इसके बारे में सिफारिश करेंगे। मिर्ज़ा गालिब ने पहली दरख्वास्त दी जो नामंजूर हो गई। इस तरह मिर्ज़ा गालिब ने 4 दरख्वास्तें दी और 5वीं में साफ तौर पर लिखा कि आप मेरे हिस्से की जो पेंशन है उसको सिर्फ मेरे नाम कर दीजिए और उसको बहाल कर दीजिए। तब इस पर उस वक्त के वायसराय ने कोई गौर नहीं किया और पेंशन शुरू नहीं हो सकी। मिर्ज़ा गालिब मायूसी के हालात में दिल्ली लौट आए। अपने कई खुतूत में भी इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह अंग्रेज़ अफसरान हिंदुस्तानियों का इस्तेहसाल करते थे और उनको सिर्फ एक ज़रा सा मौका चाहिए इस्तेहसाल करने के लिए। इसके बाद माली दुश्वारियों का सिलसिला तो उनके साथ चल ही रहा था। एंग्लो अरबिक स्कूल में जब एक उस्ताद की एक पोस्ट निकली तो उसके लिए मिर्ज़ा गालिब ने दरख्वास्त दी और चूँकि जब मिर्ज़ा गालिब इंटरव्यू के लिए स्कूल के गेट पर पहुंचते हैं पालकी में बैठकर और स्कूल के प्रिंसिपल को इत्तला देते हैं कि मिर्ज़ा गालिब आए हैं, तो वो उनको फ़ौरन बुलाने के लिए कह देते हैं। लेकिन गालिब की खुदगर्जी यहाँ भी सामने आ जाती है और वो पालकी से नहीं उतरते, इस इंतज़ार में रहते हैं कि स्कूल के प्रिंसिपल मुझे खुद लेने आएंगे, मेरा इस्तकबाल करेंगे और मुझे ले करके जाएंगे। लेकिन जब काफ़ी देर हो गई, प्रिंसिपल को इस बात का पता चला तो खुद आए और उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ नौकरी के लिए आए हैं, नौकरी के लिए मैं आपका इस्तकबाल नहीं कर सकता, ये रवायत के ख़िलाफ़ है, लिहाजा आपको ऐसे ही आना चाहिए। हाँ, किसी और मौके पर अगर आप आते तो मैं आपका ज़रूर इस्तकबाल करता। गालिब ने कहा तो अगर यहाँ मेरी इज़्ज़त को अगर आँच पहुँचती है, उसमें कमी आती है, तो ऐसी सरकारी नौकरी मुझे नहीं चाहिए। ऐसे थे मिर्ज़ा गालिब और उनकी यादगार गालिब को लिखने वाले उनके शागिर्द मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस वाक़ये को बहुत खूबसूरत अंदाज़ में लिखा है। ऐसे ही मिर्ज़ा गालिब से मुताल्लिक़ और भी बहुत सारे वाक़यात मिर्ज़ा यादगार गालिब में हैं। जैसे
मिर्ज़ा गालिब के मुतालिक लिखते हैं यादगार गालिब में मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के मिर्ज़ा गालिब ने दिल्ली में तकरीबन 50 बरस का वक्त गुजारा और इन 50 वर्षों में, इन 50 सालों में मिर्ज़ा गालिब अपना खुद का घर नहीं खरीद सके। हमेशा किराए के मकान में रहे। जब एक मकान से दिल भर गया तो दूसरे की तलाश शुरू हो गई। ऐसे कई उनके जानने वाले, उनके शागिर्द या मिर्ज़ा गालिब के जो शागिर्दाने दिल्ली में थे, उनके वालिदैन ने या और जो जिनकी माली हालत बहुत अच्छी थी, अपने मकानात थे, मिर्ज़ा गालिब को कई मकान मालकान ने बग़ैर किराए के यानी कि मुफ्त में घर रहने को दिया। आज पुरानी दिल्ली गली कासिमजान में मिर्ज़ा गालिब की हवेली के नाम से जो बहुत मशहूर है और रोज़ बरोज़ वहाँ उर्दू से मोहब्बत करने वाले हिंदुस्तानी या बैरून ममालिक के जो स्कॉलर हैं या उर्दू गज़ल या उर्दू शायरी से मोहब्बत करने वाले रोज़ बरोज़ इस हवेली में आते हैं और मिर्ज़ा गालिब के शाहाना अंदाज़, यानी कि मिर्ज़ा गालिब ने उम्र भर माली दुश्वारियों का सामना तो किया, लेकिन जब उनके पास पेंशन का रुका हुआ पैसा या कहीं से वजीफ़ा आ जाया करता था तो अपने आप को किसी वज़ीरज़ादे या किसी नवाब से कम नहीं समझते थे। उनके मुतालिक उनके दोस्तों ने कई ऐसी बातें तहरीर की हैं। एक बार उन्होंने एक अंगरखा के मुतालिक यानी कि अचकन जिसे कहते हैं उसके मुतालिक एक दोस्त की फटी हुई थी और मिर्ज़ा गालिब के पास में नई अचकन थी। उन्होंने कहा कि मिर्ज़ा गालिब कहते हैं कि मुझे आपकी अचकन बहुत अच्छी लग रही है, मैं बदला करना चाहता हूँ, यानी कि आप मुझे दे दीजिए अपनी और आप मेरे ये अचकन ले लीजिए। दोस्त ने इसको समझा, समझ तो गए मिर्ज़ा गालिब कितने बड़े दिल के आदमी हैं और ये चाहते क्या हैं, यानी कि अपने दोस्त की इज़्ज़त के लिए मतलब अपने नई अचकन को भी इन्होंने उस पर दे दिया, यानी कि उसको दे दिया इनाम के तौर पर या दोस्ताना अंदाज में। इस तरह मिर्ज़ा गालिब ने रामपुर का सफ़र किया। रामपुर के हालात, मिर्ज़ा गालिब के ख़ुतूत, उन ख़ुतूत में बहुत सारी ऐसी बातें जो मामूली तौर पर हमारे सामने नहीं आती, मतलब मुताला करने पर ही हमारे वो सामने आती है या उनको कुछ क़ारीन उनको पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने मिर्ज़ा गालिब की यादगार गालिब में सामने आ जाती हैं और हम मिर्ज़ा गालिब को एक मयारी शायर, एक अच्छा नस्र निगार और इस तरह के उनकी ज़िंदगी में जो ढेर सारे बहुत सारे वाक़यात गुज़रे, उन सब को मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बहुत ही शानदार अंदाज़ में पेश किया है। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। आदाब।